Hello, students. As we were studying chapter 18, the United Nations, which is an organization which maintains peace around the world, and how it's supposed to do and how it was formed, we are going to study the history about that, how this United Nations formed. So far in this history, we have learned that World War was started in 20th century. World War One was continued till 1914 to 1918 and it ends in 1918. World War II started in 1939 and it ends in 1945. Meanwhile, a League of Nations was formed to maintain peace, but it wasn't successful. After that, bomb was dropped in Hiroshima and Nagasaki, two countries of Japan, by USA. The World War II was stopped, and the whole world and the whole countries were realized that they need peace around among them because war will not give them anything. So they set up United Nations. United Nations is an organization which promotes international peace. So I have told you that Franklin Roosevelt and Winston Churchill, they both formed the United Nations. And let us study that United Nations. The United Nations is an international organization. It was founded in 1945 right after the end of World War II. कब इसको फॉर्म किया था 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था. After the Second World War by 51 countries. So total 51 countries have signed this organization formation. जब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी तो कितनी कंट्रीज ने फॉर्म किया था इसे मिलकर के 51 कंट्रीज ने. आइडियाज वॉज ऑफ यूएसए एंड यूके एंड इट बिकम. सो जब यूनाइटेड नेशंस बना था, व्हेन द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड, there are total 51 countries were the member of United Nations, and it was came into being in October 24, 1945. और इसने अपना वर्क कब से स्टार्ट किया? 24 अक्टूबर at San Francisco in USA. San Francisco is in America. This day was celebrated all over the world as UN Day. So when 24 October come, we will celebrate the UN Day. And the UN headquarters is in New York, USA. At present, UN has 193 member countries. Children, when the United Nations forms, among these 51 countries, India was also there. So, India was the member of United Nations since the beginning of it. India जब से United Nation बना है तब से उसका member है. अब पहले इसमें 51 countries थी. Now there are 193 countries. Which are the member of United Nations organization, which is also known as UNO, and its headquarters is in New York. You have to remember this thing. Now, objectives of UN. What UN wants. The main aim of UN to achieve world peace. इसीलिए तो इसे बनाया गया था ताकि वर्ल्ड में पीस रहे, वॉर नहीं हो. So its important objects are maintaining international peace and security, that there will be peace around the world and everybody is secure. Developing friendly relation among nations, that no nation fight to each other, they talk each other in friendly way. Promoting social progress and better living standard. So promoting social progress and better living standard. So social progress means progress of each and every country. Those people who are poor and those who are rich, they help each other in getting the progress. And better living standard means all of the people will get everything they need for the survival, like food, clothes, a job, okay, all the living standards they will working for it. Promoting human rights and basic freedom all over the world, irrespective of caste, color, creed, sex or language. तो सभी को human rights और freedom मिले. यानी we have studied about the fundamental rights, children. मतलब all the people will get right to speak, right for education. सबको education मिले, सबको बोलने का अधिकार मिले, सबको vote करने का freedom मिले, है ना. So that it will also work on that every country is free from all that. There will be no discrimination according to their caste, according to the color of their skin and the creed and the sex they are born in. मतलब either they are girl or they are boy or they are other one, and the language they spoke. So there will be no discrimination among them. Solving
humanitarian problem peacefully in cooperation with every member nation. So if there is any problem among the countries, so they will solve it peacefully, not with a war. So these are the main objective of the UN, what they supposed to do. First of all, do not forget, mention international peace among friendly relation among the country. So you just read the chapter. Now let's talk about the symbol of United Nations. As you can see, this is the flag of United Nations. There is a world map over there of white color, which are surrounded by two olive branches. Children, olive branches are the symbol of peace. This flag was accepted by United Nations which time? On 20th October 1947. It's written over here. So after the formation after the formation of 3 years, it was accepted by the United Nations as their flag. Now let's talk about the main organs of the UN. Children, अगर कोई organization बनी है तो उसके काम करने का तरीका भी होगा, वो किस तरह से काम करती है, क्या क्या उसके organs हैं, हाँ so UN have, so the main organ of United Nations are, so basically when United Nation was formed, it have 6 basic principles. इसके 6 main objective थे जिन पे से काम करना था, 6 main parts थे. So these 6 main parts were, first of them was the General Assembly. That when the charter of the UN was established, the 6 principal organs were there in the world. The first one is the General Assembly. The second one is the Security Council. The third one is the Economic and Social Council. The fourth one is the Trusteeship Council. And the fifth one is the International Court of Justice. And the sixth one is the Secretariat. So United Nations works basically in this 6 group. First one is the Secretary General Assembly. Second one is the Security Council. Third one is the Economic and Social Council, the Secretariat, the Trusteeship Council, and the International Court of Justice. These are the 6 main organs of United Nations. ये यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन हैं जिनमें ये वर्क करता है, और ये सारे ऑर्गन्स का अपना अपना एक सेपरेट वर्क होता है. अगर हम एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो चिल्ड्रन हमें उसमें पार्ट करने पड़ेंगे और उन एक बेसिक पार्ट को एक बेसिक वर्क देना पड़ेगा. जैसे कि हम जब स्कूल में वर्क करते हैं तो वी विल डिवाइड द क्लास इनटू फ्यू ग्रुप्स सो दैट वी कैन कंप्लीट द वर्क. Same way, United Nations divided into 6 parts so they can complete their work easily. Now, let's talk about the first one, the General Assembly. Okay, but before that, there is one more thing I want to tell you, that this Trusteeship Council, the 6th one or the 5th one is over here. This is no longer working now because the work of the Trusteeship Council was we will study, but it is not now working. तो basically ये जो टॉप 5 हैं, ये हमारे जो 5 हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सेक्रेटरीट एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस 5 आर एक्चुअली वर्किंग. The Trusteeship Council is not longer working. The reason we will study as well. And that all the 6 organs over here, जहाँ पे जितने भी 6 organs हैं, इसमें से जो ये last हमारा बचा है, the International Court of Justice, its headquarter is in Netherlands, not in USA. Rest of them headquarters is in USA. ज़्यादातर का न्यूयॉर्क में ही है हेडक्वार्टर इन सब का, बट इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है. इसका कहाँ है? नीदरलैंड्स में. इट्स इन हेग इन नीदरलैंड. सो यू रीड दिस. The 4 and of the 5 primary organ of the are located in New York, leaving the International Court of Justice, which is located in The Hague in the Netherlands. So let us study the function of these organs. So first of them is the General Assembly. Children, as you can see the picture of General Assembly, it's look like a parliament, and it is a parliament, children. Here the people of all 193 countries representative come and sit and discuss what is the matter and what they want now for keeping the peace. ये एक
कोर्ट की तरह ही है, ये एक पार्लियामेंट की तरह ही है, पर इसमें क्या है, जो सारे 193 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे इंडिया का, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट अमेरिका का, चाइना का, ऑल द पीपल, one people will sit here and represent their country over here. They will talk about the problem they are facing and how they can solve the problem. What are the changes they want and what they will do to bring peace. अगर कोई कंट्री प्रॉब्लम में है तो ये लोग यहीं पे डिसाइड करते हैं कि उसकी हेल्प कैसे करनी है. और जैसे कि अभी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, यू नो दैट द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन ऑफ कोरोना वायरस. So they have discussed about the coronavirus and how they are going to vaccine all the world with that. You know, all the protocols we are following, that maintaining 6 feet distance and all of them, they are given by the United Nations to the world. Now read about this. The General Assembly is the largest body of United Nation. आप देख ही सकते हो कितने लोग हैं, ये सबसे बड़ा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है. इसमें यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स हैं. It composed of all the member countries of UN and works like a world parliament for them. It is the main policy making body and that discuss the budget matter and the peacekeeping efforts. So ये क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है, बजट तय करती है कि उस पॉलिसी में कितना पैसा लगेगा, एंड पीस कीपिंग एफर्ट, जो भी शांति बनाने के लिए एफर्ट कर सकते हैं वो असेंबली में ही डिस्कस होते हैं. एंड दिस असेंबली मीट वंस इन अ ईयर, एक बार तो जरूर मिलती है ईयर में, और इट कैन मीट मोर देन वंस इन एन स्पेशल केसेस और इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी. अगर कोई इमरजेंसी हो तो वापस भी मिल लेती है. सो इफ दे वॉन्ट टू मेक डिसीजन, दे वॉन्ट मोर देन हाफ वोट. अगर हाफ से ज्यादा वोट मिले उस डिसीजन को करने के लिए तो वो पास हो जाता है. Like if I want to decide a class monitor among your class and your class represent a general assembly, अगर आपकी क्लास को जनरल असेंबली बना दिया जाए और मुझे उसका हेड, so if I want to select a class monitor, then the class monitor must got more than half vote, so he will become the monitor. So that in the same way it works. If they want to make a decision, they need more than half vote for that decisions. Majority wins type thing. Now let's come to the Security Council. We have learned about the General Assembly in which 193 members sit together and discuss about the problems and make policies about them. Now let's talk about the General Assembly. Children, the Security Council is the most responsible one in this, because it maintain the work of peace and security. आपको नाम से पता लग रहा है सिक्योरिटी काउंसिल है, तो इसका वर्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या करती है, ये सिक्योरिटी और पीस के लिए वर्क करती है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है. इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं. देयर आर 193 मेंबर्स इन दिस, बट देयर आर ओनली 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल. अमॉन्ग दीज 15, 5 are permanent members. They are permanent members, and 10 are non-permanent members. Non-permanent का मतलब कि उनको चेंज करते रहेंगे हम. These non-permanent members are elected by the assembly for 2 years. ये सिर्फ 2 years के लिए ही elect होकर आएंगे. अब जो 5 member countries हैं वो कौन कौन सी हैं? So 5 permanent member countries are France, China, Russia, UK and USA. You have known these names. ये बहुत पावरफुल कंट्रीज भी हैं. फ्रांस, चाइना बहुत पावरफुल है. रशिया इज ऑल्सो वेरी पावरफुल. यूके मीन्स इंग्लैंड, है ना, जो हमारे ऊपर रूल करने आए थे, यूनाइटेड किंगडम, यूके. एंड यूएसए मीन्स अमेरिका. सो फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके एंड यूएसए, दे ऑल आर द 5 permanent member. And 10 non-permanent member, it can be India also, but it is only for 2 years. ये 2 years के लिए ही होंगे और इनको कौन सेलेक्ट करेगा? जनरल असेंबली सेलेक्ट करेगी. So they are only for the 2-year case. And what they will do, the Security Council, what it will do? In case of a war, the Security Council tries to get the fight countries to declare ceasefire. तो क्या कर सकती है, अगर मान लो किसी 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज के बीच में वॉर की कंडीशन होगी, तो सिक्योरिटी काउंसिल उस वॉर को आकर के रोक सकती है थोड़े समय के लिए और अपनी पीस कीपिंग फोर्स को उस एरिया में भेज करके वॉर को स्टॉप कर सकती है और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकती है.
और जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अपनी पीस कीपिंग फोर्स को भी जगह जगह भेजती है ताकि वहाँ पर वॉर की कंडीशन ना बने. सो दैट इज द वर्क ऑफ इट. It is responsible for the world security and peace. If two countries are about to fight, they can stop the war and they can resolve the problem over there. Now, let's talk about the Economical and Social Council. Children, नेम से पता लग रहा है इकोनॉमी एंड सोशल. अगर कोई कंट्री फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है तो ये क्या करते हैं, ये जो हमारा काउंसिल है वो इनकी हेल्प करता है. They will supply money over there, they will supply food over there, है ना. So it will help in that form. Like some countries are very poor in South Africa and Asia. So what it will do, it will provide them food and money to get rid of poverty and hunger. So it will also provide better living standard, and it will also provide better sanitation and health facilities. So let's read the ECO मतलब Economical and Social Council helps to promote social programs and better living standard for the people. It deals with the social and economical problems which look after by 54 members. Yes, so how many there are? 54 members, and they are elected for 3 years. अब इसमें कितने मेंबर हो गए? 54 मेंबर्स हो गए, और दे ऑल आर इलेक्टेड फॉर 3 years. So we have here, there are 193 members. There are 5 permanent, 10 non-permanent. For those non-permanent are for 2 years. And there are 54 members. They all are elected for 3 years. और कौन इलेक्ट करेगा इनको? जनरल असेंबली. अगेन जनरल असेंबली ही इनको इलेक्ट करती है. जो भी डिसीजन होते हैं वो जनरल असेंबली ही लेती है. देखो यहाँ भी जनरल असेंबली ही लेगी. अब देखो इस पिक्चर में दिख रहा है ना, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, एंड दे आर हेल्पिंग दीज चिल्ड्रन, दे आर गिविंग देम फूड. सो द इकोसॉस, इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, सेंड्स फूड, क्लोथ्स एंड अदर एसेंशियल commodities to the poor-ridden countries or those who are affected by the natural calamities. अगर कहीं बाढ़ आ गई या कहीं अर्थक्वेक आ गया और वहाँ पर फूड नहीं है, प्रॉपर फूड की प्रॉब्लम है, क्लोथ्स की प्रॉब्लम है, और कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड कराएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. नाउ let's talk about the trusteeship council. Children, I have already told you that this council is no longer working because the work of this council is to look after for those countries which are not independent. इस काउंसिल का क्या काम था? इस काउंसिल का उन कंट्रीज के ऊपर ध्यान देना था जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट नहीं है. बट क्या हुआ? In 1993 all the countries get independent which this country is looking after. तो कोई सी भी टेरिटरी नहीं रही. जैसे इंडिया वॉज टेरिटरी था पहले ब्रिटिश का, ऐसी कोई भी टेरिटरी अब नहीं रही. ठीक है, अब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के ऊपर रूल नहीं करती है. तो दिस ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नो लॉन्गर वर्किंग. सो व्हाट इट वाज डूइंग, इट वाज टेकिंग केयर ऑफ दोज कंट्रीज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर कंट्री एंड ट्राई टू मेक देम फ्री. सो एंड यू कैन सी ओवर हियर on November 1993 Pacific Island Palau, the last remaining trusteeship territory, agreed to the part of US. जो लास्ट थी वो US का पार्ट बनने के लिए रेडी हो गई, और अब क्या है, इसका वर्क अब सस्पेंडेड है, यानी बंद है. अगर ऐसा कभी फ्यूचर में होता है कि कोई कंट्री किसी की टेरिटरी बनती है या फिर किसी के अंडर कंट्रोल में चली जाती है जो वो नहीं चाहती है, तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल उनकी हेल्प करेगा. बट अभी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, अभी वर्क बंद है. Now, let's talk about the International Court of Justice. So, it's a court, it works like a court, like Supreme Court does. It is also called the World Court. So, I have told you that its headquarters is not in New York, it is in Hague in Netherlands. So, its headquarters is in Hague in Netherlands. It is a judicial organ of UN and settle international disputes of peacefully. तो जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होती है कंट्रीज़ के बीच में किसी चीज़ को लेकर के, तो वो कोर्ट में जाती है. कौन से कोर्ट में? इंटरनेशनल कोर्ट में. एंड दे सॉल्व आउट दी प्रॉब्लम्स ओवर देयर, दे मेक रूल्स इंटरनेशनली ओवर देयर. एंड
The judges of this international court, there are total how many judges? 15 judges, which was selected for 9 years by the General Assembly. How many judges? 15 judges for 9 years. And by whom? Again by General Assembly. Now, let's talk about the Secretariat. अब जो सेक्रेटरीट है चिल्ड्रन, वो क्या करता है, वो जो डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम होती है, डे टू डे टास्क होते हैं, उसे फिनिश करता है. एंड इसका हेड कौन होता है? इट्स हेड इज सेक्रेटरी जनरल. देयर इज वन फोटो गिवन ओवर हियर. दिस इज बान किन मून. In your book it is given that it is the Secretary General, but now he is not longer the Secretary General. He was. Now the Antonio Guterres, he is the Secretary General now. He is from Portugal and he is the 9th Secretary General. So before, इनके पहले तो जो थे वो आपकी बुक में दिया हुआ है. अभी कौन है? एंटोनियो गुटरेस. He is the Secretary General. So Secretary General Ban Ki-moon was the 8th one. Before that there was Kofi Annan. And what was his work? Their work is to give UN a list of the matters that can cause war, that can cause peace, that can cause problem in peace. तो इन सेक्रेटरी जनरल का क्या काम होता है कि वो यूनाइटेड नेशंस को वो प्रॉब्लम बताएं जो क्या कर सकती है, पीस को तोड़ सकती है. हो सकता है कि कोई ऐसा मैटर हो जो पीस क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो, जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का वॉर है ना. देयर सो मेनी थिंग्स दैट कैन डिस्टर्ब द पीस. The China was doing unfair thing. So all these problems, all this trouble was told by the Secretary General to United Nations that this problem you have to solve. Ban Ki-moon was the Secretary General. Now who is there? Antonio Guterres. So you have to read the chapter till here. Rest of the chapter will continue after this. Bye. Take care. Read chapter properly. It's important.